हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश 300। तो आज हम आ चुके हैं फिर से एक नई संडे राइड पे। तो आपको दिख रही होगी बाइक्स खड़ी हुई, अभी दो ही हैं और आगे और राइडर्स हमें आगे मिलेंगे। BMW S7 RR M Pro Sports, और पीछे खड़ी है अपनी बाइक। ये भाई अपने एडमिन साहब फोटोग्राफी करने में लगे हुए हैं। सो काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई आप व्लॉग मतलब मोटो व्लॉगिंग करते हो बट व्लॉगिंग नहीं करते। तो अब ये मेरा पहला व्लॉग है जिसमें मैंने मोटो व्लॉगिंग प्लस व्लॉगिंग की है। और जो इस कैमरे का जो इशू आ रहा था कि भाई इसमें कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होता था, मतलब जो इंट्रो में रिकॉर्ड करता था वो अपने आप ही ऑटोमेटिक कट जाता था। तो मेन दिक्कत ये थी, अपने आप ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाता था। इस चक्कर में अब मैं थोड़ा सा देखूँगा, इसको भी थोड़ा इसके बारे में भी देखना है अगर कैसे ठीक होता है। नहीं तो जो इंट्रो है हम व्लॉगिंग में ही शूट करेंगे, क्योंकि वो लग नहीं रहा है कि कैमरा ये थोड़ा ठीक है, ये नॉर्मल राइड के लिए ठीक है बस। तो भाइयों हम अपने दूसरे मीटिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। और अगर मुझे पता नहीं पीछे इंट्रो अगर रिकॉर्ड हुआ है इस कैमरे में या नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता। तो अभी तो हमारी ये दो ही बाइक्स हैं और राइडर्स अभी आ रहे हैं, अभी कोई आया नहीं है। तो हम ही सबसे पहले पहुँच चुके हैं। तो देखते हैं भाई, जैसी और सारी बाइक्स आती हैं तो भाई जैसी सारे राइडर्स आते हैं जब भी मैं आपको क्या होता है बाइक्स दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ ड्रोन फ्लाई होते हुए तो बाजी उड़ा रहे हैं।
सो भाइयों फाइनली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और पीछे अपना सारा ग्रुप खड़ा है और अब जाने का टाइम है। ज़्यादा कुछ था नहीं वीडियो में, आज पहली बार ब्लॉगिंग करके कमेंट करके बताना कैसी लगी। ये फर्स्ट ब्लॉगिंग प्लस मोटो ब्लॉगिंग वीडियो है। चलते हैं, पीछे सारे बाइकर्स खड़े हैं और निकल रहे हैं घर के लिए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.